So children, question number 4. People did this? Debit, credit, understood? Moving ahead. Question number 5, visible children? Same logic we'll be applying. Same logic. If item says that I am either an asset or an expense, we'll categorize it as what, children? Debit balance. And if the item says that I belong to the category of capital liability of income, we'll call it as what, children? Credit balance. Ready? Chaliye. Capital belongs to the category of what, children? Capital. General expense, machinery, wages, bad debts also, expense or loss एक ही बात है. Sale, commission. Is it told to us? Conservatism principle, what we'll say? Bills payable, children. बैंक ओडी, बैंक से लोन बोरो किया, लाइबिलिटी. डिस्काउंट में भी सर कुछ नहीं लिखा है. नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्सपेंस. बिल्डिंग, स्टॉक, असेट, एक्सपेंस. इंश्योरेंस प्रीमियम, चिल्ड्रन, expense. Creditors, loan, credit, obviously liability. Purchase, reserve, liability. Cash in hand, children, asset. Time allotted less than a minute. Mark debit, credit quickly, children. Moving ahead, children. Capital, debit, credit, children, credit. Sales, credit. Bills payable, credit. Overdraft, great. Drawings is the opposite of capital. What to do, children? Debit. Creditors, credit. लोन तो खुद ही बोल रहा है मैं चोर हूं, पकड़ लो मेरे को, फांसी पे डाल दो. क्रेडिट. रिजर्व फंड, चिल्ड्रन, क्रेडिट. बाकी सब डेबिट. समझ में आया कि नहीं? पक्का? कंफर्म? तो ऑल अनमार्क्ड डेबिट. शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए, मूविंग अहेड. बस ये ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 6, visible to all? Less than a minute's time. Mark A-C-L-I quickly. तो चिल्ड्रन, नाउ अब आपको प्रैक्टिस काफी हो चुकी है. अब सीधे बड़े बन जाइए, बड़े भैया. डॉक्टर एंड कंपाउंडर, डेबिट एंड क्रेडिट. ड्रॉइंग्स, सर डी से ड्रॉइंग्स, डी से डेबिट. कुछ तोता है वो ऐसे भी रखते हैं. स्टॉक, debit being an expense. Capital, credit. Furniture, debit. Creditors, credit. Printing charges, debit. Bank loan, credit. Freight, debit. Income tax, children. Why? Duffers would say expense. Intelligent people would say that it is ड्रॉइंग्स. दिस शोज कि आपने जर्नल का होमवर्क कैसे किया है. मशीनरी, व्हाट चिल्ड्रन? डेबिट. परचेज, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट बीइंग एन इनकम. डिस्काउंट अलाउड, डेबिट. सेल्स, रेंट बीइंग एन एक्सपेंस. सन्ड्री एक्सपेंस, चिल्ड्रन, डेबिट. बिल रिसीवेबल बीइंग एन असेट. कैरेज आउटवर्ड, डोंट गेट कंफ्यूज विद रिटर्न आउटवर्ड, ये एक्सपेंस है, डेबिट. इंश्योरेंस, क्रेडिट, डेबिट. इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम कलेक्ट करना इज एन इनकम, दे क्रेडिटेड, वी डेबिटेड. बिल्स पेबल, चिल्ड्रन, डेबिट. लाइबिलिटी है, क्रेडिट. हर्ड दिस वेल चिल्ड्रन? चलिए, shall I proceed further? Moving ahead to question number 7. The income tax is not expense, children. It's a personal expense called as drawings. पता लगा एग्जाम में क्वेश्चन आया, इनकम टैक्स इज कैटेगराइज्ड एज व्हाट? एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, नन ऑफ दीज. आप लिख के आएंगे नन ऑफ दीज की जगह एक्सपेंस है. आंसर नन ऑफ दीज इसका. समझे? इसीलिए बोला था डेली 2 बार शीट पढ़िए, डेली. लोग कह रहे नहीं क्या करेंगे पढ़ के. चलिए, मूविंग अहेड चिल्ड्रन. डायरेक्ट रेफरेंस. ड्राइंग्स,
capital, creditors, credit, bills payable children, credit, debtors, debit, bill receivable, credit, it's an asset, debit, loan from Shamim, loan taken children, liability, credit, furniture, debit, stock, why? Expense, cash at bank children, debit, purchase, sale, salary, traveling expenses children, commission paid, discount received, कैश इन हैंड, कुछ बोलते हैं डेक्रेट, डेक्रेट बोल रहे हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों, परचेज रिटर्न व्हाट चिल्ड्रन, क्रेडिट, एंड सेल रिटर्न, एंड ये तो आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो, व्हेन वी यूज्ड टू डू जर्नल एंट्री चिल्ड्रन, ऑलवेज परचेज रिटर्न सेल रिटर्न किस साइड पे होते थे, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट नेवर डेबिट, सेल रिटर्न ऑलवेज डेबिट नेवर क्रेडिट. चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8. चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 8 में वी हैव समथिंग यूनिक. आप डेबिट क्रेडिट तो मार्क करेंगे जरूर, यू विल सो कॉल्ड टोटल इट आउट ऑल्सो, बट आपका टोटल यहां पे टैली नहीं करेगा. सर क्यों नहीं करेगा? डेलिबरेटली फॉर टीचिंग यू अ न्यू कॉन्सेप्ट आई हैव डन सो. So if children, your trial balance mismatches, I repeat, your trial balance mismatches, और आपके पास सब कुछ है जो होना चाहिए ऊपर वाले की कृपा से भी और क्वेश्चन में भी, डेबिट अगर शॉर्ट है चिल्ड्रन, we will total it, I repeat children, we will total it, and this shortage would be written on the debit side children, because debit short था, called as drama, tragedy, climax, action. No, it will be called as suspense account. सर ये तो बहुत अच्छा है सर, हमारा आंसर नहीं आएगा सर एग्जाम में, हम भी यही लिख के आएंगे. आपकी कॉपी में सिंबल बनेगा ऑडी का, या जलेबी तलते जाइए आप. You as a student is not supposed to do it if you have done wrong postings. Exclusively such questions are designed by teachers children, where they also know कि हमने कुछ गायब किया हुआ है, तो बच्चे का टोटल टैली नहीं होगा. तो रियल बिजनेसमैन when they prepare their journal after that ledger children, बैलेंस करने के बाद जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, many a time it happens, गलती होती रहती है इंसान से और वो टैली नहीं करता. Temporarily they put an account titled as suspense account. If debit is short, they put the value on the debit side. And children, if credit is short, they will put the value where? Credit side. So if I say what is 30 plus 20 plus 10 children, and what is 10 plus, sorry, it's 40 plus 10 plus 5 children, 55. So debit side we have what is called as 55,000, and credit side we have 60. Which side sounds short? By what? We'll insert what children? तो ऐसे प्री प्रोग्राम्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट आपने कुछ गलत पोस्ट कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अग्रीइंग, एंड यू पुट सस्पेंस अकाउंट, मार्क्स कट जाएंगे आपके. तो अपनी गलती को छुपाने के लिए डू नॉट टेक इट एज अ प्ली. क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग बेस्ट एफर्ट्स ऑफ योर्स, राइटिंग ऑल प्रॉपरली चिल्ड्रन, राइटिंग ऑल प्रॉपरली, टैली नहीं करेगा. तो आप क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट. तो इफ डेबिट इज शॉर्ट, suspense account will be on the debit, and if credit is short children, suspense account will be on the credit. But गलती कर दें, that's why tally नहीं हो रहा, इसलिए suspense account लिख दें. प्लीज, चोट नहीं लगी है तो पट्टी बांध के पैर में रेड कलर का सिंदूर ना लगा लें और पीटीआई से बोले मेरे तो पैर में चोट लगी, मार्चिंग कैसे करूंगा. समझ में आया कि नहीं? बट कभी कभी भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास नहीं होता. यहाँ पे भगवान टीचर है चिल्ड्रन. Question gives you balance of almost everything. What is missing? And your credit is short. I repeat, what is short? Credit. अगर ऐसा हो रहा है, then you won't write suspense.
then you will write what children? तो दो बातें याद करिए. If you are preparing a trial balance, capital is also given, then to tally nahi ho raha. In spite of recording everything very correctly, the account will be suspense. S से suspense, S से सर. समझ में आ गया? सर आपका नाम भी आज से सस्पेंस सर है सर. आपको समझना बड़ा अजीब है. But if capital is not given and credit is short, क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट. अच्छा डेबिट शॉर्ट होगा, ड्राइंग्स नहीं, हम ड्राइंग्स मान लेंगे. ऐसा नहीं है, बस जितना बता रहा हूं उतना ही फॉलो करना है आपको, क्योंकि बिजनेस में ओनर का होना जरूरी है, कंट्रीब्यूशन जरूरी है, उसका पैसा निकालना जरूरी नहीं है. तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, पुटिंग एवरीथिंग करेक्टली, credit is short, capital is not given, you will insert what? But if it is given, capital दिया आपको, डेबिट क्रेडिट कुछ भी शॉर्ट होता है, क्या लिखेंगे आप? सस्पेंस अकाउंट. बात समझ में आ गई? क्रेडिट. Listen carefully. When capital balance is not given and total of trial balance is short, where children? Credit side. This credit shortage would reveal what? Capital. And if it is given, तब भी आ रहा है, तो क्या होगा? Suspense. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 8 मार्क कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा. ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आप. मार्क्ड एवरीबॉडी? Then children, from your so called assignment booklet, mark the homework. You have question number 3 on the screen, this one, fourth one. Then children, 5th, 6th, 7th, 8th, sorry, not the 8th one, 5th, 6th, 7th children. Then 9th, after 9th children, 12th. People would say sir 12th में तो already बना है ट्रायल बैलेंस. गलत है भाई, ₹2 ट्रायल बैलेंस है. 12th followed by 13th. Marked everybody? Then children, we have the DKG set. From this set, you will be doing question number 2, followed by 3A, 3B, followed by 4, followed by 6. 5th छोड़ दीजिएगा. Followed by 6th, followed by 8th, only these many are to be done. So everybody well heard the homework? Solve उन्हीं को करना है, those who have the desire to get 100. जो 99 लाना चाहते हैं, no need to do homework. समझ में आ गया? चलिए.